Hello my dear student, today we will discuss type of acceleration and some numerical. So in previous class we have already discussed about unit, dimension and definition of acceleration. So in this class we discuss about uniform acceleration, means type of acceleration. So if you know about uniform acceleration, variable acceleration, instantaneous acceleration, which is linked with the uniform velocity, uniform speed. तो जदि तुम यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड टा बुझी जाओ तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बुझी पारबो किंतु ताको डेफिनेशन हिसाब रे ही हमें सेमान को डिराइव करथिलु यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी को. सो हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रो डेफिनेशन का आगे देखना. Acceleration is equal to velocity upon time. Then in the problem, how can the velocity of particle in every point changes with respect to time? And as for this phenomenon, the acceleration is divided into some categories. So first we study about uniform acceleration. So in case of uniform acceleration, how can velocity of particles at every point changes with respect to time? देखो suppose the body moves at A point to B point with different velocity. That means at this point the body moves with velocity 5 meter per second in 1 second. At this point the body moves with velocity 10 meter per second in time 2 seconds. At this point the body moves with 15 meter per second in time 3 seconds. At this point the velocity of body 2 meter per second in time 4 seconds. That means ऊपरे हमें जहाँ भी नोचू बॉडी जे कोनोसी पॉइंट रे तार वेलोसिटी केते केते हबा सेटा देखेछि आउ तळे टाइम रो रेस्पेक्ट में जाइछि. That means in 1 second the body moves with velocity 5 meter per second. Meter per second velocity रो unit. In 2 seconds the body moves with velocity 10 meter per second. Say सबके हम देखा दीजिए. So if we want to calculate the acceleration of body at every point, then at this point the acceleration of body is velocity upon time, that is 5 upon 1. At this point the velocity acceleration of the body 10 upon 2 means 5. At this point the acceleration of body 15 upon 3 means 5. Here also the acceleration of body is 5 meter per second square. That implies 20 upon 4. That means here also acceleration is 5 meter per second. That means if a body moves with a large distance, in this case the body moves from A to B, at every point if we want to calculate acceleration of the body, then every point the acceleration of the body is same. और in case of uniform means ही सब पॉइंट रे समान रहबा. That means सब पॉइंट रे ई केस में एक्सेलरेशन समान रहबा भले ही काका में कमा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जब सब पॉइंट रे वेलोसिटी समान रहिता भले हम ताके कोइ तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी. But in this case we study about uniform acceleration. That means every point the acceleration of the particles is same. And it is possible when the velocity of particle changes equal amount. Equal amount means 5 bolla, out 5 bolla, out 5 bolla in equal interval of time. Because velocity equally change हेले ही जदि हमें टाइम रो रेस्पेक्ट में ताकि डिवाइड करना ले सब पॉइंट रे एक्सेलरेशन का समान बाजिबा. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जे वेलोसिटी इक्वली चेंज होबा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो लिखि दबा द एक्सेलरेशन of a body is said to be uniform acceleration if its velocity changes equal amount रे velocity change होगा. Equal amount in equal interval of
time. So the velocity of time kaje nalo because acceleration is equal to velocity upon time. That means velocity equally change hour equal interval of time ने जो सब पॉइंट ने एक्सेलरेशन का वैल्यू समान हेबा सेटा बे एक्सेलरेशन का हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नेक्स्ट हमें देखबा वेरिएबल एक्सेलरेशन. So first we draw a graph between velocity and time. In case of uniform acceleration जाने की तुम्हें आगे भी पढ़बो टाइम सेकंड velocity meter per second. So according to this graph or tabulation 1 second time 2 second 3 second 4 second 5 second 4 second है also 4 second. So in 1 second here I am unit number 5 meter per second 10 meter per second 15 meter per second 20 meter per second. So जेहेतु इटा यूनिफॉर्मली इक्वल वेलोसिटी कवर होची इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो compulsory the graph will be produce a straight line slope. That means in 1 second the body moves with velocity 5 meter per second. In 2 seconds the body moves with velocity 10 meter per second. In 3 seconds the body moves with velocity 15 meter per second. In 4 seconds the body moves with velocity 20 meter per second. That means if we plot a graph between velocity and time, then in case of uniform acceleration the velocity time graph is always produce straight line slope. Our is one in this case slope is dv by dt. यदि का x एक्सिस रे था इधर y एक्सिस रे थीटा वाला स्लोप काने को दी तो dy by dx. In this case y axis रे v अच्छे x axis रे t अच्छे तो slope will be dv by dt. So dv by dt slope or the slope of dv by dt slope give the value of acceleration. So माने रखी थी जे velocity time graph रू हम काना पाएबो you find the value of acceleration. Distance time graph तुम काना पूछलो distance upon time speed पाउथिलो. Displacement time graph काना पूछलो displacement upon time velocity पाउथिलो. परीक्षा रे एक मार्क के क्वेश्चन पढ़बो. Similarly velocity time graph काना पाएबो velocity upon time acceleration पाएबो माने रखिबो. Then we discuss about variable acceleration. So variable acceleration means सामान्य जिनिसटा बार-बार हम बुझे छ स्पीड वेलोसिटी रे बुझे लेमा तो इने इजीली बुझी पारबो. Variable acceleration means if the body moves from A to B with different velocity and if we want to calculate the acceleration of the body at any point then the acceleration of body at every point is different or variable. So this acceleration is called as variable acceleration. और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन सब पॉइंट रे समान रहथिला किंतु वेरिएबल एक्सेलरेशन रे एक्सेलरेशन सब पॉइंट रे समान होबा. अब इटा केते बेले पॉसिबल होबा जेते बेले तुम डिस्टेंस का इक्वली कवर नहीं कर अनइक्वली कवर होबा. सॉरी जेते बेले तुम वेलोसिटी का इक्वली चेंज नहीं कर अनइक्वली चेंज होबा. दैट मींस 5 मीटर पर सेकंड यदि 5 नहीं बड़ी को यदि 3 बड़ी थांता इने तुम 12 बड़ी थांता मींस 3 to 12 means 4 meter per second body बढ़ला another 20 meter per second or another 50 meter per second or 70 meter per second. तार माने in this case the velocity changes unequal amount जेतु velocity unequally change होची so जदि हम velocity upon time करमा बोले acceleration इन 5.11 हबा एठी 8.2 हबा एठी 12 upon 35 3 हबा 3 second. In this case the acceleration of the body is 17.4 हबा. That means if we want to calculate the acceleration of the body at every point then the magnitude of acceleration at every point is variable. So this acceleration is called as variable acceleration and it is possible when the velocity is unequally changes. जब equally changes इति तबले
वेलोसिटी अपन टाइम करथिले एक्सेलरेशन सब जगह समान बारी थिला किंतु अनइक्वली चेंज करबा द्वारा हमें वेलोसिटी अपन टाइम करबा बेले एक्सेलरेशन सब जगह अलग अलग बारीबा अब अलग अलग बारीले सेते बेला हम देखम वेरिएबल एक्सेलरेशन सो वेरिएबल एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अनइक्वली चेंज हबा अनइक्वली चेंज हेले ही एक्सेलरेशन सब जगह अलग अलग बारीबा so variable acceleration the acceleration of a body is said to be uniform that लिखि दबा is said to be variable acceleration if its velocity changes unequal on खाली एठी ऊपर on लगे दबा unequal amount अलग अलग अमाउंट पे वेलोसिटी चेंज हेले बोले एक्सेलरेशन अलग अलग ही बारीबा और अलग अलग बारीले तका मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन सो वेरिएबल एक्सेलरेशन का जे वेलोसिटी अनइक्वली चेंज हबा मने रखियो so unequal amount change haba in equal interval ठीक আছে then if we graph plotting a graph between velocity time in case of variable acceleration then देखो 1 second रे body 5 meter per second हबा ठीक আছে देखिला in 2 second the body moves with velocity 8 meter per second 2 second 8 means पाखा पाखी रहबा In 3 seconds, the body moves with velocity 12 meter per second. 12. ये पकड़ना बाबू. Then finally, in 4 seconds, the body moves with 70 meter per second. So if we join the point and point produce curve. So in case of तो ठीक अच्छे slope का सब बेले velocity time graph पर slope सब बेले acceleration ही produce करती. किंतु vt ग्राफ रे तुम केन स्लोप पाइथिलो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ रे तुम स्ट्रेट लाइन स्लोप पाइथिलो स्ट्रेट लाइन स्लोप किंतु वेरिएबल एक्सेलरेशन टाइम रे तुम स्लोप केनता रहउछे कर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन केस ऑफ वेरिएबल acceleration is produced सरला बहुत सहज है अगर हम वेरिएबल स्पीड हो कि वेरिएबल वेलोसिटी हो कि वेरिएबल एक्सेलरेशन हो कर्व ही प्रोड्यूस हबा जदि हम ग्राफ करना ठीक है एटा छला वेरिएबल एक्सेलरेशन तो वेरिएबल मींस वेलोसिटी सब जगह रे सॉरी एक्सेलरेशन सब जगह रे अलग रहले ही एक्सेलरेशन का वेरिएबल कहम अब वेरिएबल केते बोला ना जेते बोले तम वेलोसिटी का तम अनइक्वली चेंज हबा सेदले वेलोसिटी अपन टाइम कले एक्सेलरेशन भी अलग अलग पॉइंट अलग अलग भारीबा सेते बोला हम वेरिएबल एक्सेलरेशन कहना तो देखो अब नेक्स्ट हमें पढ़ना इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन सो बार बार मैं बुझाई बाबू मैंने इंस्टेंट मीट होचे टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल दैट मींस एट a particular instant of time if we calculate the acceleration of body then that acceleration is said to be instantaneous acceleration so like it here the acceleration of a body at a particular instant of time or a particular point in which time is very small it's called instantaneous acceleration. So now already we have studied. Suppose this body moves from A to B. At this point, if we calculate the acceleration of this body, then at this point the time interval is very small. जेहेतु टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल रोचे सो एक्सेलरेशन के क्वाज बाय इंस्टेंटेनियस acceleration. So the formula of acceleration is change in velocity upon change in time. But in case of instantaneous acceleration,
the time interval is very small. और जदि गोटे स्मॉल वैल्यू के जदि हमें रिप्रेजेंट करना टाइम जेहेतु स्मॉल रोचे तो स्मॉल वैल्यू के रिप्रेजेंट करना dt माध्यम रे टाइम स्मॉल रहला dt जदि x स्मॉल रही त हम dx कहिथाम तो so time small रहला dt and with respect to small time the velocity also be small. So this is the formula of instantaneous acceleration dv upon dt. पहला एका में देखमा गुडे दुटा न्यूमेरिकल स्पीड रो. So this is your question. A man goes from A to B. A man goes from A to B, v1 speed, and return B to A with v2 speed. Then find average velocity and average speed. So as for this question, a man goes from A to B with speed v1. Then when this man return to A from B, then the speed is v2. Then according to question, what is the average velocity? So we know that the formula of average velocity is equal to total displacement upon total time. That means s1 plus s2 t1 plus t2. So in this case net displacement will be 0 because body A ru bahariला B तक गला आउ थरे B ru A आसला. That means body जेन पॉइंट रू bahariला आउ थरे से पॉइंट के गला. So net displacement 0 हेबा. किंतु डिस्टेंस 0 नहीं बे. डिस्टेंस गोटे स्केलर क्वांटिटी से सब ले पॉजिटिव रहबा. 5 मीटर गला आउ 5 मीटर आसला. वैसे टोटल केते मीटर गला 10 मीटर. किंतु डिस्प्लेसमेंट गोटे वेक्टर क्वांटिटी ताके हम डायरेक्शन हिसाब से कंसीडर करसी. तो से जदी पॉजिटिव 5 मीटर गला नेगेटिव 5 मीटर आसला तो प्लस माइनस इक्वल 0 हेबा. सो डिस्प्लेसमेंट जेहेतु वेक्टर क्वांटिटी तो गोटे पॉइंट रू बाहरी बा गोटे बॉडी आउ गोटे पॉइंट रू बाहरी कर आउ थरे जदी से पॉइंट को रिटर्न करबा से तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हेबा जेने कि ऑलरेडी तुम पढी थिबो. सो इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द मैन गोस फ्रॉम A to B and comes again A from B. सो नेट डिस्प्लेसमेंट केता बा A रू बाहरी ला B के आउ थरे A के गला. सो नेट डिस्प्लेसमेंट कंपल्सरी 0 हेबा. So in this case velocity is 0 because net displacement of the body is 0. Then second question हमरे पचरे छ average speed बात करो. So you know that the formula of average speed is total distance upon total time. So हमें total distance तो नहीं जानबा हमें लेट नामा धरो बॉडी A रू B के जाउछे d distance और B रू A के आउछे से d distance के आउछे B रू A के आउछे A रू B के द्वारा d distance से और B रू A के आसला से d distance के. So total distance हला 2d. total distance 2d हवा बुझेबा कि डिस्प्लेसमेंट A रू B वाला d B रू A आसला -d. सो वेक्टर हिसाब से डायरेक्शन हिसाब से धरलो तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हेलो. किंतु टोटल डिस्टेंस हला 2d. एबे देखो ई A रू B के जीवा के केते टाइम लागु छे धरो t1 देन B रू A के आसबा के केते टाइम लागु छे t2 t1 और t2 हम के धरबा बाहर करबा के पड़बा. सो A रू B के जीवा के t1 टाइम दरकार होचे केते स्पीड रे जाउछे एज पर क्वेश्चन v1 स्पीड रे जाउछे. सो t1 इज इक्वल टू केता होबा तो जाइछो speed is equal to distance upon time. So time is equal to distance upon speed. So in this case when the body travel from A to B it cover distance d and speed v1. So time is d by v1. In this case, time is the body when moves converges from B to A, its speed is v2 and distance is same d because A रू B के कॉलेज d होचे बोले B रू A के असले भी d हवा. So in this case, speed is equal to distance upon velocity or distance upon speed. तो speed B रू A के असले तो second case speed कितना है v2. So total time जगह पे हमें लिखी पारना d upon v1 plus d upon v2. लगी पारमा that implies average speed is equal to
d कॉमन जीवा तो रहबा इन 1 by v1 plus 1 by v2 dd cancel that implies 2 by let's solve करो v1 v2 v2 plus v1 v1 v2 v2 plus v1 finally speed average is equal to ऊपर के पड़ेगा 2 v1 v2 by v1 plus v2 so this is the value of average speed but जब गोटे बॉडी का ए रु बाहरी लाउ आउ थरे ए के रिटर्न कला तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी 0 होला किंतु एवरेज स्पीड एकी होला छि ना मैं परमा a man covers 3 equal distance with a man covers 3 equal distance with speed v1 v2 and v3 find average speed so you know that the formula of average speed is equal to total distance upon total time हमने तीनटा इक्वल डिस्टेंस दीचे सो तीनटा डिस्टेंस नामा और तीनटा डिस्टेंस जदि अच्छे बेले बॉडी तीनटा टाइम रे ही कवर करबा सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम सो क्वेश्चन हिसाब रे आगो देखो ए मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस सपोज this is d distance and another d distance and another d distance that means the man covered 3 equal distance d d d so total distance कितना होगा total distance होगा 3d so total distance 3d एवं हमके टाइम दरकार बाबू माने तो देखो फर्स्ट फार्मूला माने पकड़बो और तापर टोटल डिस्टेंस कितना होगा टोटल टाइम कितना होगा नीचे भागबो तो एबे देखो हमें टाइम दरकार तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 इक्वल डिस्टेंस कवर करूची केते स्पीड द्वारा v1 v2 आउ v3 स्पीड जावा द्वारा तार माने फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करूचे फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करूचे v1 स्पीड द्वारा और टाइम धरो t1 होला सेकंड हाफ डिस्टेंस कवर करूचे v2 स्पीड द्वारा टाइम धरो t2 एंड थर्ड हाफ डिस्टेंस कवर करूचे v3 स्पीड द्वारा टाइम धरो t3 हमके टाइम दरकार सो जेहेतु फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ने d डिस्टेंस और स्पीड v1 सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन दिस केस सेकंड हाफ डिस्टेंस ने तो हमर डिस्टेंस होचे d और स्पीड होचे v2 तो सेकंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन v2 एंड इन दिस केस डिस्टेंस होचे d और स्पीड होचे v3 तो सेकंड टाइम थर्ड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन v3 so every half distance the man cover with t1 time t2 time and t3 time which already calculate so putting this value t1 जा रही dy v1 t2 जा रही dy v2 plus t3 जा रही dy v3 हमें टाइम भी कैलकुलेट करो सेटा के डायग्राम बनाबो d d d करबो स्पीड भी तो जानिछो ई हाफ टाइम ई हाफ डिस्टेंस में तुम d जानिछो स्पीड जानिछो तो टाइम आराम से जानो सिमिलरली ई हाफ डिस्टेंस रे भी तुम d जानिछो स्पीड जानिछो टाइम जानो ई हाफ डिस्टेंस रे भी तुम d जानिछो और स्पीड v3 दीजे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये भी टाइम बारीबा और से तीन का टाइम के प्लस कर हो जाए तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो 3d in this case d is common 1 by v1 plus 1 by v2 plus 1 by v3 dd cancel तो speed average is equal to 3 upon this is v1 v2 v3 v1 v1 cancel v2 v3 plus v2 v2 cancel v1 v3 plus v3 v3 cancel v1 v2 that means speed average equal to 3 v1 v2 v3
बाय सजे को लिखि दमा v1 v2 plus v1 v3 v2 v3. So this is the value of average speed. This question is in the numerical दिथिबा 3 equal distance velocity एक दी दिथिबा value ले ई फार्मूला तरेला average speed रो केतला numerical तुम केतला देबी परे तुम करबो numerical एबा हम देखमा velocity रो केतेटा तो वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला देखना if displacement in t function is equal to tq minus 60 square plus 90 tq minus 60 square plus 90. Then find velocity at first question. Find velocity at t is equal to 3 second. Find acceleration at t is equal to 5 second. So time function में तमार displacement दीजिए तो velocity already बाहरी जीवा आराम से because we know that velocity is equal to displacement upon time. So ये formula काहे लगेला because इटा time function रे दीजिए तो differentials का formula आसबा instantaneous velocity का formula आसबा कोई थी already. So d by dt of s जाती लगेगा tq minus 60 square plus 90. तो solve करो differentiate 3t square minus 60 plus 9. This is velocity and according to question velocity at कितना time में बाहर कर बोलते 3 second रे. So finally velocity is equal to 3 into t जगह 3 पुट करो जब क्वेश्चन में 3 सेकंड का वेलोसिटी बाहर करो 3 स्क्वायर माइनस 6 into 3 प्लस 9 सॉल्व करो এটা তুমি নিচে যা भी वेलोसिटी बाहर का मीटर पर सेकंड लेकिन सेकंड क्वेश्चन हमके बाहर करवा আছে एक्सेलरेशन इन केटा टाइम 5 सेकंड तो बाबू माने वेलोसिटी तो समथिंग बाहरी जीवा सेने जदि टाइम भरणा करबो बोले एक्सेलरेशन हेबा से जिनिसटा तो माइंड रू थिंक जेन करू तो सेरा आउट कर देबो जब ई टाइप रो फंक्शन दीचे बाबू माने बोले तुम कंपलसरी एक्सेलरेशन को भी फंक्शन रो बाहर करबो ना तो देखो इन वेलोसिटी का तुम पाही गलो किंतु से वेलोसिटी केते सेकंड रे पाइलो 3 सेकंड रे तो सेटा के तुम एक्सेलरेशन बाहर कला बेल के यूज करबो ले भूल जीवा तो वेलोसिटी पाई गलो ना और टाइम दीचे तो वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन रॉन्ग ई टाइप रो फंक्शन दीचे बोले तुम एक्सेलरेशन रो वैल्यू भी डेरिवेटिव रो बाहर करबो तापर जेते टाइम में तुम पछरे एक्सेलरेशन सेते पुट कर हां सिंपली वेलोसिटी और सिंपली टाइम दीथि था बोले एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम किंतु इन फंक्शन दीचे अब इन जे वेलोसिटी बाहरला बाबू माने 3 सेकंड रे बाहरी गला तो से जिनिसटा हम एक्सेलरेशन जेहेतु 5 सेकंड रे पछरे छे यूज करि नै पारू वेलोसिटी अपॉन टाइम करि ही नै बे तो डिफरेंशियल फंक्शन दीथिबा बाबू माने बोले एक्सेलरेशन भी हम डिफरेंशियल द्वारा ही बाहर करबो तो देखो वेलोसिटी के डिफरेंशियल द्वारा बाहर कला केतकी हला सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt दैट मींस d by dt ऑफ वेलोसिटी जेते बाहरी छे डिफरेंशियल में सेटा पुट करबो सरला क्लियरली बुझला बाबू माने तो टाइम दीचे ना बोल तो वेलोसिटी बाहर करी टाइम हरडा करबले रॉन्ग आंसर हेबा मन रखियो बिकॉज़ इने जन वेलोसिटी बाहर से 3 सेकंड रे बाहरी छे तुम के एक्सेलरेशन बाहर करबा छे 5 सेकंड तो ई कंडीशन रे तमे डायरेक्ट टाइम यूज नहीं करी तमे वेलोसिटी रो भी जो डिफरेंशिएट वैल्यू बाहर छे से जिनिसटा के यूज करबो और एक्सेलरेशन बाहर करबो तो सेटा बेले तमे एक्सेलरेशन 5 सेकंड बाहर करी पारबो सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt ऑफ प्लस तो जो तम 360 minus 6 plus 0 9 the constant
that means acceleration is equal to 6 into time केते दीचे acceleration बार करो 5 minus 6 that means acceleration is equal to 24 meter second minus 2 करबो चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन v equal to if v equal to 2t square plus 40 2t square plus 40 meter per second then find acceleration at एक नंबर में कोई चाहिए find acceleration at t is equal to 3 second second question कोई चाहिए find average acceleration from 0 to 3 second find average acceleration from 0 to 3 second तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो वेलोसिटी t सेकंड में बाहर करो बोलछे सॉरी एक्सेलरेशन t सेकंड में बाहर करो बोलछे तो वेलोसिटी दीचे तो ई टाइम में तुम t सेकंड दीचे और इनके फंक्शन दीचे એટલે कंपलसरी ना डिफरेंशिएटर फार्मूला यूज हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt ऑफ वेलोसिटी जेते दीचे 2t स्क्वायर प्लस 40 दैट इंप्लाइज 40 प्लस 4 दैट इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टाइम केते दीचे 3 तो 4 into 3 12 plus 16 meter per second square अब तुमसे बाहर करो बोलते फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 3 seconds तो फर्स्ट मने को व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन is equal to total velocity plus total time मुझे दुईटा वेलोसिटी का देले नीचे तो दुईटा टाइम दीचे तो क्वेश्चन में बाबू माने टाइम का तुमके ऑलरेडी दी दीचे ना तब बाहर करबा के चाहो तो एवरेज एक्सेलरेशन कि बिना फंक्शन हिसाब से दीचे मने रखिया तो तुम इने यूज करबा बाबू माने फंक्शन हिसाब से दीचे मींस चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम यूज करबो तो इने एक्सेलरेशन रो फार्मूला भूल कहि देली करेक्शन करबो इने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम एक्सेलरेशन रो काजे फार्मूला बाहरीबा एवरेज एक्सेलरेशन रो काजे बाकी एवरेज स्पीड रो काजे से टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ही हेबा किंतु सेरा भी डिफरेंशिएट केस में फाइनल हेसी तो एटा मैं आउट नेक्स्ट क्लास रे आउ भल से क्लैरिफाई कर बुझे देबी आज मने रखियो जे एवरेज एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट केस रो हारुची चेंज केस रो हारुची डिफरेंशिएट केस रो तब बाहर कर दो 0 to 3 तो चेंज केस रो हारुची तो v2 v1 t2 t1 ही हेबा अब ये फार्मूला एवरेज एक्सेलरेशन रो कॉमन है सब यूज है एवरेज एक्सेलरेशन पचरे बाबू बाकी जगह ने तुम टोटल करबो तो देखो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 v1 t2 t1 सो v2 t2 t1 तो जानी होगा t1 दीचे 0 और t2 दीचे 3 that means 3 - 0 एबे असला v2 और v1 के बाहर करबो v2 केते होबा देखो तो v दीचे तुम 2t square plus 40 that means टाइम जदी तुम 0 ने रहबा पहले v1 केते होबा 0 2 plus 4 means 6 so v1 जाती लगभग 6 एबे टाइम जदी तुम 3 सेकंड कहिचे तो v2 केते होबा देखो वेलोसिटी रो वैल्यू दीचे तो डायरेक्ट t जगह ती वैल्यू पुट करबो पहले वेलोसिटी रो वैल्यू भाई जो हला तो वेलोसिटी रो वैल्यू केते होबा वेलोसिटी पचरे कि चेंज इन वेलोसिटी हम एक्सेलरेशन पचरे थी तो वाले डिफरेंशिएट करथि तो किंतु ई फंक्शन दी को तुमके वेलोसिटी पचरे छै बोले t जगह ती अगर वैल्यू पुट करले वेलोसिटी पाइबो सो t जगह ती फाइनली 3 पुट करो तो 2t स्क्वायर 3 3 9 into 2 18 plus 4 3 12 and मैं 8 2 10 30 फाइनल वेलोसिटी v2 केते पुट करबो 30 माइनस that means 24 by 3 means 8 meter per second square this is average acceleration
और जेन जेन जिनिस मन डाउट रहउछे बाबू माने मन रखो किंतु लास्ट मोमेंट में जेनटा कहली जस्ट ये भूल कहि देथिली जे एवरेज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज v2 - v1 upon t2 by t1 हां एवरेज स्पीड मींस टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम s1 + s2 by t1 plus t2 हेबा अब एवरेज वेलोसिटी भी s1 + s2 by t1 plus t2 हेबा किंतु जेहेतु नन वेक्टर क्वांटिटी बाबू माने साइन केते केते बेले चेंज हि पारे किंतु तमे डिफरेंशिएट केस रे यूज करबो बेले सब बेले फाइनल माइनस इनिशियल हेबो जने नेक्स्ट क्लास रे आउ हम क्लैरिफाई कर दम क्लियर कर दम थैंक यू।